गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। चलो आज हम शुरू करेंगे पिन होल कैमरा। A pinhole camera. You might think that we need a lot of stuff to make a camera. Not really, if we just wish to make a simple pinhole camera. So let us see how we can make it from this activity. Take two boxes of the cardboard such that one can slide into another with no gap in between, and cut open one side of each box on the opposite face of the larger box. Make a small hole in the middle just like figure 11.5a. In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 centimeter. Then cover this open square in the box with tracing paper, that is translucent screen, figure 11.5b. Now slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. Your pinhole camera is ready for use. Hold the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. You should use a piece of blank cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distant objects like a tree or a building through the pinhole. Make sure that objects you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Move the smaller box forward and backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end. Are these pinhole images different from their shadows? Look through your pinhole camera at the vehicles and the people moving on the road in the bright sunlight. Do the pictures seen in the camera show the colors of the objects on the other side? Are the images erect or upside down? Surprised? No. Let us now image the sun with our pinhole camera. We need a slightly different setup of this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadows fall on the clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? Look at these pinhole images of the sun where an eclipse is visible from your location. Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at the image as the eclipse begins. You will notice a part of the image of the sun gradually becoming darker as the eclipse starts. Never ever look directly at the sun. सूरज के सामने कभी भी खुली आँख से नहीं देखना चाहिए. कोई ना कोई बीच में आवरण रखना चाहिए, जैसे गोगल्स हो, अच्छी गोगल्स, है ना. सूरज के सामने तो डायरेक्टली देखना नहीं है. क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारी आँख में जाती है और हमारी आँख की स्किन बहुत ही नाजुक होती है और उसको डैमेज हो सकता है, राइट. इसीलिए कभी भी सूरज के सामने डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज़. There is an interesting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. See figure 11.6. These circular images are in fact the pinhole images of the sun.
The gaps between the leaves acts as a pinholes. These gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see circular images of the sun and try to locate the images of the sun when an eclipse occurs next. That could be so much fun. Bujo has this thought: we show upside down images of the people on the road with our pinhole camera. अभी जब हमने अपने pinhole कैमरा में से देखा था ना, तो अपसाइड डाउन उल्टी इमेजेस, गाड़ी सीधी जा रही होती है रोड पे लेकिन हमें उल्टी दिखेगी. सो व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन? डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट? अभी आप मेरे को बोलो, सूरज को देखोगे तो आप कैसे बोलोगे कि अपसाइड डाउन है? क्योंकि वो तो पूरा चमकता है, हर तरफ से देखो तो एक जैसा ही होता है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे कुछ नहीं बोल सकते आप, है ना. Paheli has another thought: surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. तो लाइट अगर स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो ही एक पिनहोल कैमरा में उसमें इमेज बनती है. अभी लाइट स्ट्रेट पाथ पे जाती है, वो हमें देखना है एक एक्टिविटी के थ्रू. Let us use a piece of pipe or a long rubber tube, light a candle and fix it on a table at one end of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. 11.7a, right? And is the candle visible? Bend the pipe a little while you are looking at the candle. Is the candle visible now? Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? So what do you conclude from this? That light always travels in a straight path or a straight line. This suggests that light travels along a straight line, right? That is why when opaque objects obstruct it, a shadow forms. तो लाइट तो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही जाती है. अगर बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पर पीछे शेडो बन जाता है, राइट. सो कैमरा हमको बनाना है, पिनहोल कैमरा. कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है. देखो कि दो बॉक्स लेने हैं हमें. कैसे बॉक्स लेने हैं कि एक बड़ा और एक छोटा सा, उससे थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए, राइट. और एक की साइड पूरी खोल देने की है और दूसरी की साइड में देखो बी में जो है उसमें हमने सेंटर में से काट के एक ट्रांसलूसेंट पेपर जैसा लगा रखा है, राइट. और पिन होल जैसा फर्स्ट ए में देखो हमने होल करके रखा है. ये वाला ए वाला जो है वो बड़ा बॉक्स है, बी वाला है वो उससे थोड़ा सा छोटा है. उसके सेंटर में हमने वाइट कलर का पेपर लगा के रखा है, देखो काट के, है ना. और फिर जब बॉक्स को आगे पीछे करेंगे तो आगे का जो इमेज होगा वो हमें पीछे पेपर के ऊपर दिखेगा. इस तरह से हम स्लाइडिंग पिन होल कैमरा बना सकते हैं, राइट. नाउ बात करते हैं रिफ्लेक्शन, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन. व्हाट इज़ मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन? वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम. घर पे हम लोग मिरर्स यूज़ करते हैं ना, आईना, बाल बनाने के लिए, तैयार होने के लिए. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. So what you see is a reflection. तो मिरर में जो दिखता है वो क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्शन होता है. We also see reflections of other objects that are in front of the mirror. Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake. Now एक एक्टिविटी है. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट द नाइट और इन ए डार्क रूम. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड ए मिरर इन हिज और her hand at one corner of the room. Stand at the another corner with a torch in your hand and cover the glass of the torch with your fingers and switch it on. Adjust two fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch through onto the mirror that you
friend is holding. So do you see a patch of light on the other side? देखो क्या किया हमने, एक अंधेरा है कमरे में पूरे, राइट, और एक फ्रेंड को बोला हमने कि कोने में मिरर लेके खड़े रह जाओ। दूसरे के हाथ में टॉर्च है, राइट। अभी हमने क्या किया, टॉर्च को कोने में जो फ्रेंड है उसके हाथ में मिरर है, उसके ऊपर टॉर्च की लाइट हमने सेंड की, और वो आईना जो है, लड़की ने जो हाथ में आईना पकड़ा है उसने थोड़ा सा एंगल ऐसे किया तो वो लाइट बैंड होके, देखो हमने लाइट तो भेजी थी लड़की की तरफ, या जो पिक्चर में दिख रही है उसकी तरफ, लेकिन वो अल्टीमेटली लाइट कहाँ जा रही है, वहाँ बाजू में खड़े दूसरे बॉय के ऊपर। तो हमने लाइट को मोड़ दिया आईने की मदद से, है ना। Adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room. This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. तो ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि मिरर, आईना जो होता है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। Here is an activity that shows light traveling along a straight line and getting reflected from the mirror. अभी एक और एक्टिविटी है, फिक्स ए कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकोल शीट एंड फिक्स ए मिरर ऑन द अदर साइड ऑफ द, as shown in figure. Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb and keep this in the sunlight or send a beam of light from a torch through the comb. What do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in the figure 11.9? तो अभी देखो हमने क्या किया कि सामने एक आईना रखा है, आईने के आगे एक हमने कॉम्ब रखा है, और लाइट को, टॉर्च को इस तरह से करते हैं कि कॉम्ब के जो स्पोक्स होते हैं उसके बीच में से लाइट जाएगी, राइट। तो एक तो कॉम्ब का शैडो पड़ेगा और सामने मिरर रखा हुआ है, तो मिरर में से रिफ्लेक्ट होके उसका इमेज भी नीचे पड़ेगा। तो एक इंसिडेंट, एक शैडो कॉम्ब का, एक मिरर का रिफ्लेक्ट होके दोनों एक जगह पर मैच हो जा रहे हैं। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रैवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। सो हियर वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर व्हाट इज़ ल्यूमिनस। जो खुद की लाइट देते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस। मिरर तो आपको पता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो लाइट को रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। पिनहोल कैमरा तो अभी हमने बनाया। फिर रिफ्लेक्शन, जहाँ से लाइट, जहाँ हमने इंसिडेंट की वहाँ से रिटर्न आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। शेडो, जहाँ पर से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगी वहाँ पीछे उसका डार्क स्पॉट बन जाएगा। फिर ट्रांसलूसेंट, जिसमें से लाइट पूरी तरह से रुक भी नहीं जाएगी और पूरी तरीके से पास भी नहीं हो पाएगी, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जो सब्सटेंस को पूरी तरह लाइट को अपने आर पार जाने देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है पूरा। कल नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।